student, let us continue with the same topic, same chapter, legislature. So today we will be studying about the merits of bicameral legislature. We have studied about we have two kinds of legislature. One is the unicameral legislature and another one is the bicameral legislature. We have studied about the unicameral legislature. In unicameral legislature, what we have single one chamber. Uni means one, cameral means chamber, chamber means house. And in bicameral legislature, we have two. That means bi means two, cameral means chamber, legislature means house. So let us now talk about the demerits of bicameral legislature. So students, tell me one thing, in India, what kind of legislature we have? We have bicameral legislature. How? We have two houses, upper house and the lower house. So upper house is known as what? Upper house is known as Lok Sabha. Lower house is known as Rajya Sabha. So we have two houses. Then let me correct it. The upper house is Rajya Sabha and the lower house is the Lok Sabha. So you can remember like this. Like lower house means L means Lok Sabha and upper house means Rajya Sabha. So like this way you can remember it. So let us talk about the demerits of bicameral legislature. So first is the superfluous and unnecessary. If the second chamber always agrees with the first chamber, second chamber is superfluous. If it disagrees, it is mischievous. According to Bentham, the second chamber is needless, useless, and worse than useless. So students, superfluous का मतलब होता है unnecessary means more than enough, मतलब ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा हो जाता है सेकेंड चैम्बर. सो सेकेंड चैम्बर को इसको क्यों बोला गया, क्योंकि अगर पहली ही चैम्बर जो फर्स्ट चैम्बर है वो अगर अग्री करती है तो सेकेंड चैम्बर की ज़रूरत नहीं है एग्री करने की. अगर वो डिसएग्री करती है तो वो मिस्चीवियस है. सो बेंथम ने भी कहा था ये चीज़ कि अगर फर्स्ट चैम्बर हर चीज़ को एग्री कर रहा है देन देयर इज़ नो नीड टू हैव अ सेकेंड चैम्बर. उन्होंने तो इनफैक्ट ये भी कहा कि वो बिल्कुल यूज़लेस है, इवन यूज़लेस से भी ज़्यादा यूज़लेस है सेकेंड चैम्बर का होना. प्रिवेंशन ऑफ हेस्टी लेजिस्लेचर. if there is no if there is one chamber, the opposition party are there to prevent hasty legislation. For that purpose, there is no need of bicameral legislation. हमने पढ़ा था कि हेस्टी लेजिस्लेशन ना हो, यानी कि जल्दबाजी में कोई किसी भी तरीके का लॉ इनैक्टमेंट ना हो. तो ये सेम चीज़ ये भी बोल रहा है, ये कह रहा है कि अगर फर्स्ट चैम्बर में ही लोग अपोज कर लेंगे, जब उनके पास फर्स्ट चैम्बर में भी ये राइट होते हैं वोटिंग के, तो फिर जब वहीं पर अपोज हो जाएगा तो फिर दूसरे चैम्बर तक जाने की ज़रूरत ही क्या है. Creation of deadlocks. If there are two houses, they may fight for supremacy. In such cases, the legislation is too delayed. उन्होंने बोला कि जो डेडलॉक्स होता है, यानी कि काम इकट्ठा हो जाता है, वो ज़्यादा होता है बाईकैमरल लेजिस्लेचर में. उसके पीछे रीज़न क्या है कि दो हाउस होंगे तो दोनों का आपस में झगड़ा होगा सुपरमेसी से रिलेटेड, यानी कि कौन किससे बड़ा. सो इस केस में क्या होता है, किसी भी तरह का जो लॉ इनैक्टमेंट है वो डिले करता है, यानी कि वहाँ पे देरी होती है किसी भी चीज़ पर डिसीजन लेने में. If two houses are dominated by two different political parties, it results in frequent conflict and deadlocks. अब दोनों ही हाउसेस में अगर ऐसा हो कि दो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी अपनी अपनी सुपरमेसी दिखाए, तो इससे क्या होगा कि हम किसी भी नतीजे पर नहीं निकलेंगे, और जो पेंडिंग काम है, जो डेडलॉक्स है, यानी कि जो ऑलरेडी डिसीजंस के लिए पेंडिंग हैं चीज़ें, वो बढ़ती चली जाती हैं. Highly wasteful, as bicameralism is very expensive. It is highly wasteful. There is lot of expenditure in the form of salaries, maintenance and allowances. Yes, उनका कहना ये है कि ये बहुत ज़्यादा वेस्टफुल है. मतलब आप ये देखिए कि दोनों ही हाउसेस को कंडक्ट कराने में गवर्नमेंट के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो बढ़ेंगे, जो उसमें मेंबर होंगे, एमएलएज होंगे, उनकी सैलरीज, उनका
الاؤنسز، ساتھ ہی ساتھ اس ہاؤس کو مینٹین کرنے کی جو مینٹیننس چارجز یا فیس جاتی ہیں وہ سب بہت ایکسپینسو ہوگی جو کہ گورنمنٹ پے کر رہی ہوگی. تو یہ ساری چیزیں کافی ویسٹفل ہیں، ان سب چیزوں کی کوئی یوز نہیں ہے. Anti-democratic. As a member of second chamber are not directly elected, it is against the principle of democracy. They do not hold any kind of responsibility to the people. They are not representing the interest of the people. No essential in federalism. The interest of the state can be protected by the members of the lower house, political parties and independent judiciary. ایکچوئل میں جو لوور ہاؤس ہے وہ اپنا کام پہلے ہی کر دیتا ہے کیونکہ وہاں پہ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ الیکٹڈ ہوتے ہیں لوگوں کے تھرو آلریڈی. تو وہ لوگوں سے کافی کنیکٹڈ ہوتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ وہ کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ہوتے ہیں. اور وہاں پہ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری بھی اپنا رول پلے کر رہی ہوتی ہے کیونکہ ہر ایک ہاؤس میں جو گورنمنٹ کے تینوں آرگنس ہیں وہ اپنا اپنا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں. تینوں آرگنس آپ کو پتہ ہی ہے، لیجسلیچر، ایگزیکٹو اور جوڈیشری. تو اس لیے اپر ہاؤس کی ہمیں ایز سچ نیڈ نہیں پڑتی ہے. کنزرویٹو اینڈ ریپرزنٹیشن آف ویسٹڈ انٹرسٹ. Second chamber are cited of conservation. They oppose radical reform and prevent the progress of the nation.